So yes, correct. So if I ask, I that I am asking the data related to your function only. So according to the data of your functions, how many students have represented, the many of the participants were there. So some of the students took the part in singing, some of the students took the part in drawing, some of were showing the PPT. So the first question which was asked by me was that how many students took the part in singing? You told me one, correct? Then second question which I asked that how many students took the part in drawing? Anjali Arya says 4, Khyati says about 3. So I am taking the data as per Anjali. So it's just taking 4 now. Okay, now 4 is there. Now my third question is, how many students do you think that they have represented the anchoring part? The anchoring part. Has anyone taken the part in anchoring? Okay, nobody was there. Fine. So let's take the data 0. Let's take the data 0. Anchoring, nobody was there. So I'm taking the data as 0. Now my last question is, how many students took the part in PPT presentation? Can you give me any approx number? Okay. Some of the students says approx 6, some of the students says 7 or 8, but according to me, I think it was more than 8. Less than 10, but I think it was more than 8. Yeah, it was 8. It was not 6 and 7 because मैंने note किया हुआ है. So it was approx 8 लगभग. 8 or 9 तो था because 8 PPT I have it. I have just clicked the pictures of your PPT on that time. So correct, it was 8. Up now, I am asking a question from you all that in which mode of the participant. Okay, now next one was poem also. Correct, correct. Poem, so I left it only. How many students took the part in poem? How many students took the part in poem? Very good, correct. So it was 3. Chalo, ab ye bhi ho gaya. Now you can see I have collected the data from your class only, that how many students took the part in PPT, how many students took the part in music, how many students took the part in drawing, how many took the part in so and so events which I have asked. Now can you tell me which of the uh, event was there, or which was the topic was there on which the maximum students took the part? ऐसा कौन सी चीज थी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने I'm participate? presentation. Presentation, very good. It was PPT. PPT presentation was the topic which was taken by many of the students. Okay, and I can tell that it was maximum in all. Okay, so remember the mode of the data is, the mode of the data is called which has the maximum frequency. Okay, or you can call it the mode of the data is always which has the larger number of participants, the larger number of students, the larger number of audience, the larger number of observation present in. Okay, frequency word अभी मैंने यहाँ पे यूज किया. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बेटा, कितने नंबर ऑफ पीपल उसको अटेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा मैंने बोला एंकर 0 बिकॉज किसी ने पार्ट नहीं लिया. पोयम 3 students have taken part in poem. So 1, 2, 3. The frequency is 3. Okay, frequency is 3. Now, if you talk about PPT presentation, let's say 8 students. So 8 students is the 8 students are the frequency of PPT presentation. Okay. Now let's say music. Ria was only the one who presented the music in the class. So the frequency of music presentation was only 1 because one student has only taken the part in it. Then drawing, suppose let's say 3 students were there. Let's say 3. So drawing, again the number of students who have taken the part were 3. So the frequency of drawing presentation was only 3. ठीक है. तो अगर आप पूरे के पूरे डेटा को अगर एक तरीके से समराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि you are giving us such a beautiful example of sustainability project presentation, जो कि अभी हार्डली कुछ दिन पहले ही आपकी क्लास का डेटा था. तो आपने उसी से सारा का सारा डेटा उठा लिया. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा यू आर नोइंग कि पीपीटी प्रेजेंटेशन एक ऐसा टॉपिक था
जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और यू कैन कॉल इट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपीटी प्रेजेंटेशन वाज वेरी हाई और इट वाज मैक्सिमम. सो हियर द डेटा लाइक इज पीपीटी सबसे ज्यादा हाई है, तो जो मोड हुआ वो क्या हो गया, पीपीटी. ठीक है, मोड क्या हो गया आपके पास, पीपीटी, बिकॉज पीपीटी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पर पीपीटी 8 नहीं कहलाएगा बेटा. यू विल नॉट कॉल्ड मोड इज 8. मोड इज नॉट 8. द मोड इज पीपीटी. द मोड इज नॉट 8. मोड इज पीपीटी. ठीक है, बिकॉज पीपीटी वॉज टेकन बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई थी. सो आई एम अगेन रिपीटिंग. Suppose I am giving you another question for understanding the mode. Okay, now all of you take the help of your copy or pencil and write it down what I am speaking now. All of you write it down what I am speaking now. So as per my question, I have told you there was a test conducted and it was a 15 marks test, जिसमें से 8 students को मिला है 10 marks, 4 students को मिला है 11 marks, 5 students को मिला है 13 marks and 8 students को मिला है 10 marks. And here 7 students को मिला है 14 marks and 9 students को मिला है 15 marks. ठीक है, this is the whole complete data. Can you tell me what is the mode of this data which I have just now spoken? Can you tell me what is the mode of that? Just tabulated everything. So now you can see here that one side I have written the marks and one side I have written the number of student. और अगर आप गौर से देखो तो 10 मार्क्स जो था वो 8 बच्चों को मिला था, 11 मार्क्स जो है वो 4 बच्चों को मिला था एंड 13 मार्क्स 5 बच्चों को मिला था, 14 मार्क्स 7 बच्चों को मिला था एंड 9 बच्चों को मिला था. So if you will see properly, you will find it out here that out of these all the data, the highest frequency is written in front of 15 marks. ठीक है, in front of 15 marks. So remember, the mode of this question will be marks. I hope it is clear to everyone. Taught it to you. So mode is the data. Mode is the data which is in higher frequency, which is in the higher frequency. And now what is median? Median is the value which is the mid value, because नाम से ही आपको पता होगा median. So the mid value comes from the median. Now आपने ट्राइंगल में भी मीडियन पढ़ा था, which is joining the midpoint. So here the median is representing the mid value. Now let me explain it to you how mid value, or we can call it in another language that median and mode is being found out. Okay, so the first step for finding out mode or median, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिला है और उस क्वेश्चन में आपको या तो मोड फाइंड आउट करना है या तो मीडियन फाइंड आउट करना है, एनीथिंग. तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, which you need to do is just arrange the data. Arrange the data in the form of array. आपको याद होगा the first day when I taught you data handling chapter, the beginning only, I taught you what is array. ठीक है, ARRAY. array का मतलब होता है, array का मतलब होता है that the data which is written in the question, you just write it down that data either in ascending or in descending order. ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, जब भी आप मोड या मीडियन दोनों में से जो भी चीजें सॉल्व कर रहे हो आप, तो उसके लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपका जो भी डेटा दिया हो उस डेटा को आप सबसे पहले एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. और एरे का मतलब क्या होता है, द डेटा व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट डाउन दैट डेटा either into his ascending order or into the descending order. And remember, then without converting into array you cannot move ahead to the second step. ठीक है, now moving on to the second step. Step 2, अगर आप मोड निकाल रहे हैं
अगर आप मोड निकाल रहे हैं तो उससे क्या होगा बेटा, सारे नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे, और जब सारे नंबर सीक्वेंस में आ जाएंगे तो जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है वो आपको दिखेगा कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब आप 25 लिखोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, तो जब आप 25 लिखोगे तो 25 25 25 25 सपोज 4 टाइम्स आया है, तो आप लिखोगे 25 25 25 25। So in that way, the question will become more easy. ठीक है, 25 4 times written. So then finding mode will be more easy. Rather searching here and there कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है ना? तो उस समय मोड निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा, which I will tell you now. ठीक है? Now step 2, when you are doing the question of median. ठीक है? When you are doing the question of median. So if you are doing the question of median, there will be two cases. There will be two cases. Let me explain it to you one by one. So step 1 मैंने आप सभी लोगों को बता दिया. Now I am telling you about step 2. It will be divided into two cases. One, suppose I am writing the random data here for finding out median. Because for mode I have just now told you. Now let me tell you for median. Suppose you have numbers like this. Question is like 14, 13, 15, 11 or 10. This is the question now. ठीक है? And it is telling to find it out median from it. ठीक है? So सबसे पहला step बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया? The first step is to arrange the data in the form of array. So array के लिए I am using ascending order. You can use descending also, but I am using ascending order. So ascending के लिए जब आप इसको arrange करोगे तो it would give us 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, and the last one will come 15. Now, if I will ask from you here only, can you tell me which number is written exactly in middle here? Can you tell me? Which number can you see exactly in the form of middle here? तो अब कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको एकदम मिडिल में दिख रही है? Very good, Amit, Anjali. Rest others, please reply. Very good, Shrishti and Khyati. Correct. Here, if you see, if you talk about this data, अगर हम 2 नंबर्स यहाँ से निकाल दे, 2 नंबर यहाँ से निकाल दे, तो गौर से देखोगे तो 13 एकदम मिडिल में लिखा हुआ है, एकदम मिडिल में है, दैट इज 13. So if you have to find it out what is median from it, you can tell directly the answer that ma'am, the answer would be 13, because median means mid value. Median means mid value. So यहाँ पर तो बेटा 13 easily आ गया. If suppose I'll give you here a next question, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Can you tell me what is the mid value here? Look at here and look at the question properly and tell me what is the mid value here. Very good. I can see the answer. Khyati, Amit, Shrishti, Anupama have given the answer to me. I want answer from all of you. Anjali Singh has given answer. Ananya, Anjali Arya. Very good. Okay. Can any one of you unmute yourself and tell me ki why 8 you are telling? Alok Mishra, can you tell me? Alok Mishra, can you tell me? Ma'am, because we have taken 3 numbers only left to them. That's why it is ma'am middle. Absolutely correct. You are removing 3 numbers from here, removing 3 numbers from here. एकदम equal number आपने यहाँ से हटाया, एकदम equal number आपने यहाँ से हटाया, और आपको बीच में एकदम middle दिख रहा है, that is 8. So 8 is the number which is median here. But can you tell me this is coming very easily? Why? Can you tell me? बताओ तो you can take 6 and 7. Now let me tell you the easiest way of finding it out. आप सबसे पहले तो कोई भी यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स निकालिए, यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स निकालिए, और जो बीच में एग्जैक्ट मिडिल में 2 नंबर्स आपको नजर आएंगे. Here we can have 6 and 7. यहाँ पर 6 और 7 दिख रहे हैं मिडिल में, तो हम क्या करेंगे, 6 को और 7 को ऐड करेंगे, 6 और 7 को ऐड करेंगे, आएगा कितना, 13, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से. ठीक है, 6 और 7 को डिवाइड करेंगे, विच विल कम 13. 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, नंबर आएगा 6.5. अब आपको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 है, 6 है, 6.5 है, एंड देन यहाँ पर है 7, एंड देन यहाँ पर है 8. अब आप मुझे बताइए
क्या मैंने सही बोला? यस और नो? अब आप मुझे बताइए, ये मैं कह रही हूँ ये मीडियन है, टेल मी यस और नो. आई एम टेलिंग दिस इज मीडियन. व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट डू यू से? यस और नो? करेक्ट. यस, दिस इज मीडियन बेटा. ठीक है, सो Ma'am, रिमेंबर why 6 and 7 divided by 2? बेटा, आई टोल्ड नो आई वांट टू. आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग नाउ. So question exercise 3.2. I am taking question number 2 and it is given here the runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. यहाँ पर 11 प्लेयर्स थे जिन्होंने क्रिकेट मैच खेला, तो उनके थ्रू क्या स्कोर किया गया? दीज आर दी स्कोर्स गिवन. 615, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 and 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Counting is very much necessary. Counting is very much necessary. Reason behind, because अगर आप एक भी नंबर मिस आउट कर देते हो बेटा, आपका आंसर चेंज आएगा. ठीक है. So here the question is telling you have to find it out mean, median and mode, all the three things in this question. And generally in exam हमेशा तीनों चीज निकालने के लिए आता है. मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है. और क्वेश्चन में पूछ रहा है that are they all three same? क्या तीनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं? So let's see. The first thing I have already told you that arrange all array form. सबसे पहला स्टेप होना चाहिए you are arranging into array. So according to array you are taking the least value because I am converting into ascending. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 6 हुआ. मैंने जो जो लिखते जाओ वो अंडरलाइन करते जाओ. So it will be easy. Then 6 के बाद आपने लिखा 8 because उसके बाद 8 है. 8 के बाद 10 है. 10 हमारे पास दो बार है तो I am taking 10 two times. 10 के बाद अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली 15 आ रहा है. 15 1, 15 2, 15 3. We have 3 times 15. So I am writing here 3 times 15. 15 के बाद यहाँ के नीचे नंबर पूरे चले गए. उसके बाद है मेरे पास 50. I have written it 50. 50 भी खत्म. उसके बाद है 80 भी खत्म. उसके बाद है 100. 100 भी खत्म और उसके बाद है 120. ठीक है. After writing 120 you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Again we have counted the correct number of numbers. ठीक है. So these are 11 numbers. Now we have arranged into the form of array. Now the next step comes to find it out mean. Now as you all know the formula for mean is total sum of observation upon total number of observation. So इसके लिए क्या करेंगे? We will take the sum of all these numbers, whatever is written here, and we will divide it by. Can anyone guess what will be the number? It will be 11. Correct. It will be 11 because total number of observations are 11 here. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड करेंगे and we will divide it by 11. वो तो हो जाएगा मीन का फॉर्मूला. उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है वी हैव टू फाइंड इट आउट मोड. अब आप मुझे खुद से देखकर बताइए ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम आया है? कैन यू टेल मी विच नंबर हैज कम मैक्सिमम टाइम? सी 6 और 8 एक बार. 15. करेक्ट. 15 is a number which came 3 times. So the answer of mode is 15. ठीक है. Answer of mode is 15. I have not solved out mean because it will be a longer process and we don't have much time. So mean I have already taught you. That is why you can do it mean by your own also. Now coming to median. Now I am coming on median. Now as we have all arranged the data, तो हमें कुछ करना नहीं है. यहाँ पर टोटल 11 नंबर्स है. तो यहाँ पे एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से. ठीक है. उसके बाद एक यहाँ से, एक यहाँ से. लास्ट में कौन बच गया? बीच में कौन बच गया? 15. तो यहाँ पर मीडियन भी आ गया हमारे पास 15. और जब आप इसको मीन सॉल्व करोगे तो आपका मीन भी कहीं ना कहीं इसमें 15 ही आ रहा है. ठीक है. तो लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन
will be solved very easily of median, because क्वेश्चन में जो डेटा दिया था it was odd number. It was odd number, that is why your answer came very easily. But अगर यहाँ odd की जगह बेटा even होता तो हमारे पास दो नंबर बच जाते मीन में, ठीक है, हमारे पास दो नंबर बच जाते मिडिल में, और हम उसको क्या करते, we will add those number and we will divide it by 2. So if you have time, can you do one question जल्दी से? I will give you very easy question. Numbers बहुत छोटे छोटे दे देती हूँ, ठीक है, because one practice will be there, है ना. Please tell me this answer. Median, and I want median only. I don't want any other thing to be solved. Just solve it out median. How will you do median in this question? So the first step for finding out median, if you remember, is arranging the data into array. ठीक है. So जब आप array के लिए form करोगे, so it would be 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट. उसके बाद मीडियन, एक नंबर यहाँ से निकाला, 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 और बच गए बीच में दो नंबर. So you will be having the median 3 plus 4 upon 2. So this is 3 plus 4, this is 7 upon 2, and the answer would be 3.5. Correct. Okay. So this is the median in this